All right. So, welcome all. I think we are delayed by 5 minutes. We'll cover it up. Welcome to this platform, all the participants over here. It gives me a great pleasure and honor to introduce Nikita to all of you. Nikita, BCom from Mumbai University, and then MBA from Christ University, Bangalore, 2018. So it's been 5 years for her corporate experience, and not to mention her internship in Alchem and Axis Bank. And उसके बाद निकिता मैम equity partners में financial analyst role में रही. Equity is a KPO, knowledge process outsourcing firm. And then after 4 years in equity, she has moved to KPMG Global Services as a consultant. So it's a great, as I repeat, it's a great pleasure and honor for Skillage to introduce Nikita Sodhia on the platform. And Nikita, thank you for your time. I know it's a Saturday and taking out time during the lunch time on Saturday becomes a bit tricky, but thank you so much. And I'm sure your words, your experience today will definitely help our students. Nikita, just to give you an idea, all the students over here are part of our finance program, something that they have been learning since last 3 to 4 months, many of them. We have a curated content where all the students are getting prepared for financial analyst as a job title. Okay, and today's topic, all the participants, today's topic that what does a financial analyst do in a KPO, more from a personalized experience of Nikita, and also as she has moved from a KPO to a Big Four, what has been her experience and how does that mindset changes moving from a KPO to a Big Four. So all this today, without further ado, Nikita, over to you. The platform is yours. All the best. So hi everyone. I hope I'm audible to you guys. Please give a thumbs up or a yes in the chat box if you could hear me or whatever suits you the best. Yeah, yeah. Okay, wonderful. So honestly, okay, I'll start with my introduction. Myself, Nikita Sodhia. I'm born in my native, but I'm brought up in Mumbai, and it's been what since 28 years I'm living in Mumbai, except the 4 5 years where I was in Bangalore. Apart from that, I am a Mumbai girl, Amchi Mumbai, and yeah, that's about it. So let me tell you one thing over here. I'm not, not here to give you some gyan or anything like that. I'm just here to share my, personal experience of the corporate and how my a routine day looks like and used to look like when I was in equity and when I was in KPMG, when I am in KPMG. So, a brief background about my education and my work experience. So, I completed my graduation from Mumbai University. I did my BCom, banking and insurance. Post that, like every other, person who was fresh out of college and trying to understand everything. So after my graduation it was my trying and testing phase, as in what I'm interested in not, and then trying on some certification, helping my dad in his business and everything. So that was my I actually worked also for a few companies. I did certification. So that is the trial and error phase. And that is when I realized to grow in your career. Somewhere down the line, MBA is something that could really help me. So that is why I decided to do an MBA. And I specifically was trying to look for, institutions or universities or any college that was out of Mumbai. One thing was to gain experience on being independent, and second was I had a knack of trying to explore a new city, because all my life I had been in Mumbai. So As mentioned, थोड़ा सा हिंदी यूज करिए निकिता. That would be helpful. okay, fine. I'm so sorry. आदत है मुझे ऐसे, when corporate setup होता है, when you take meetings वगैरह, तो majorly it's English, but again I मैं English हिंदी mix करने की कोशिश करूँगी.
So मैंने MBA किया, and through my college only I did my MBA from Christ University, Bangalore. So Christ University, I got into Moody's Analytics Knowledge Services. So if I say about Moody's, so Moody's is one of the credit rating companies. तो मैंने उनकी एक सब्सिडरी ज्वाइन की थी, Moody's Analytics Knowledge Services, जो बैंगलोर में ही थी. सो इनिशियली मूडी से स्टार्ट किया था मैंने, फिर लेटर ऑन मैनेजमेंट बाय आउट हो गया तो उसको एक्विटी बुलाने लग गए. सो if I say now, I am an ex equity knowledge partners employee. तो equity में, equity में I was part of the investment research team, majorly क्रेडिट साइड पे फिक्स्ड इनकम रिसर्च और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्लाइंट की हेल्प करना. So so I was part of equity for 4 years, and उन 4 सालों में I was part of various clients. Basically, it was like like every graph grows कि पहले you start with basic, फिर धीरे धीरे you add on to your skills, knowledge and everything. तो ऐसे ही पहले basic से start करा था, फिर धीरे धीरे जैसी जैसी skill set develop होती गई, उसके बाद clients भी change होते गए. The role became challenging. And I'll be very honest, ये जो हम टेक्सचुअल लैंग्वेज पढ़ते हैं, दैट इज नॉट समथिंग विच बीज विद विच इज विद अस फॉर लॉन्ग रन. ये जो हमारा एक्सपीरियंस ही है वही काम आता है लॉन्ग रन में. तो मैंने जितना भी सीखा है, एंड वेर एवर आई एम स्टैंडिंग टूडे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव गेन्ड इट आउट ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस इटसेल्फ. डेफिनेटली MBA इन फिनेंस करने के बाद आई गॉट द नॉलेज. मुझे पता चला है कि क्या क्या होता है फिनेंस में, एंड क्या इंटरेस्टिंग लग सकता है मुझे व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग. बट प्रैक्टिकल नॉलेज इज समथिंग विच आई गेन्ड एंड विच आई स्टिल यूज टिल नाउ, एंड आई बिलीव आगे भी काम यही आएगा. हम मेजरली जब इंटरव्यूज देते हैं, सब कुछ देते हैं, तब हम पढ़ते हैं काफ़ी कुछ एकदम थियोरेटिकल एंड एवरीथिंग. बट जो कंपनीज होती हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, दे लुक फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज कि आप कैसे चीज़ों को रिलेट कर सकते हो. वो लोग फिनेंशियल ज्ञान नहीं चाहते हैं. सो So I will. So this is a very interesting point to all the participants. Sorry, Nikita, just want to reiterate one or two points that you श्योर mentioned. श्योर. Uh, सब लोगों के लिए आपने अगर सुना निकिता को, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये आप सबको पता है. So ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है. हम हर शनिवार रविवार को मेंटर सेशन लेते हैं, और हर मेंटर आके यही बात बोलता है कि प्रैक्टिकल थिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट निकिता मेंशन्ड कि मैंने जो पढ़ाई की थी, नॉलेज मिला मेरे को. जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग को नॉलेज भी मिल रहा है ऑब्वियसली. एंड उसके बाद निकिता जब वर्क में गई, उसको वो वर्क एक्सपीरियंस मिला, और दैट इज व्हाट शी इज सो प्राउड ऑफ. This is what is coming out, and that is what she's utilizing, leveraging, and she will be doing that for the rest of her career. That's exactly my point, guys, कि जब आप चीजें पढ़ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप नॉलेज नहीं कर रहे हो, तो स्किल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है चीजों को रिलेट करना. बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एन एम्प्लॉयर विल आस्क यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि आप चीजों को रिलेट करिए. एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप P&L के साथ रिलेट करिए, एक P&L को आप बैलेंस के साथ रिलेट करिए, बैलेंस शीट के साथ, एंड सो फोर्थ. हाउ स्टोरीज आर रिलेटेड. और आप लोगों को याद होगा, एंड आई एम श्योर निकिता विल सेकंड दिस थॉट, कि स्टोरी टेलिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड ऑफ एनालिसिस. अनलेस यू आर एबल टू टेल स्टोरीज verbally or non-verbally, it doesn't matter, but you need to build stories based on the numbers, right? Thanks Nikita for reinforcing these points. They're very helpful. एंड डेफिनेटली एडिंग ऑन टू योर पॉइंट की जो स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है. सो बेसिकली होता क्या है कि अगर वी आर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, अगर हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो भी उस रिपोर्ट को पढ़ेगा उनको ज्ञान होगा पूरी फिनेंशियल टर्म्स का, हर चीज़ का. तो थ्रू योर स्टोरी यू ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन वेरी सिंपलर लैंग्वेज. कि ऐसा नहीं है कि हमें 2-3 पेजेस की स्टोरी लिखनी है कि क्या है, कैसा है, क्यों है. इट्स जस्ट 1 or 2 लाइनर इन सिंपल वर्ड्स, सो दैट एनी लेमैन पर्सन कैन अंडरस्टैंड. And yeah, so this is what one of the things. And speaking of practical knowledge, अगर मैं
प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉट समथिंग जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा. प्रैक्टिकल नॉलेज इज समथिंग, मतलब तुम न्यूज देख रहे हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, यू आर टॉकिंग टू पीपल, यू आर मेकिंग कॉन्वर्सेशन, सो उससे भी प्रैक्टिकल नॉलेज आता है. अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम फ्रेशर हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आएगा. सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज नॉट ऑलवेज लिमिटेड टू हैविंग कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. प्रैक्टिकल नॉलेज इज समथिंग जो न्यूज़पेपर पढ़ने से आता है, किसी के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने पे आता है. तुम बजट देख लो, तुम्हें बजट के बारे में कुछ आइडिया लगेगा, फिर तुम उस चीज़ को रिलेट करोगे कि क्या तुमने पढ़ा. एंड दैट इज वॉट समथिंग द एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर दीज डेज. It's not the bookish language. So this is one important thing which also I learned throughout my career, and is something I will look forward to learn at each and every space. So speaking of my experience with equity knowledge partners, क्योंकि majorly जो हमारा आज का topic of discussion है, and so that is majorly my work experience as a credit analyst with equity knowledge partners with a KPO. तो बेसिकली मैं एक्विटी नॉलेज पार्टनर के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम के साथ थी फॉर 4 years, एंड मेजरली आई वाज वर्किंग ऑन द क्रेडिट साइड. एंड initially it wasn't easy trying to understand what is it that is expected of me and everything, but slowly when you network, talk to people, that is when you have a better picture of what is required of you. So in equity knowledge partners, I majorly my clients were various asset management companies, and at a particular point of time I was working for one asset management company only, and not various asset management companies. So to give you idea about asset management companies, simpler terms mein is ki so I have a XYZ company, and XYZ company basically used to have a set of few companies wherein they used to cater, and they used to look for how is it performance, so that they could build a portfolio for their investors, and they could have a better idea about the sectors and everything. So at a point of time I was working with one asset management company, and under that company, under that client had 300 400 odd companies to be covered in their portfolio. But we were a team of close to 8 to 10 people, and this is what I'm speaking of my latest experience. So we were a team of 8 to 10 people, and every team member used to manage a portfolio of 80 to 100 companies, wherein they used to look at their regular performance, कि कंपनी के कंपनी का क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे कि कंपनी कैसी है, क्या है, कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते थे. तो बेसिकली कंपनी का बैकग्राउंड, उसका स्वॉट एनालिसिस, उसका कंपनी का देखा जाए तो मतलब कंपटीशन में कैसा है मार्केट में थ्रू पोर्टर्स, फाइव फोर्स, मेनी अदर कॉन्सेप्ट्स. And apart from that, it was majorly looking at the financial statements, and not just 1 year financial statements, over a period of 5 year financial statements. So अगर मैं अपने काम की बात करूँ, so I was majorly into creating financial models, creating financial reports for that particular you know company which was part of that asset management company. For example अगर मैं दूँ तो for example मैंने लिया कोको कोला इंडिया. तो अब मैं कोको कोला का मैं बैकग्राउंड स्टडी करती थी, मैं रिसर्च करती थी कि व्हाट इज कोको कोला इनटू, हु आर इट्स कॉम्पिटिटर्स, उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या होती थी. देन आई यूज टू स्टडी देयर फिनेंशियल रिपोर्ट्स, उनकी वेबसाइट्स देखती थी कि वट एवर नॉलेज मुझे मिल पाए उनकी वेबसाइट से, वो मैं नॉलेज गेन करूँ, और वो चीज़ मैं अपने रिपोर्ट्स में डाल सकूँ, अपने मॉडल्स में डाल सकूँ. तो बेसिकली आई यूज टू क्रिएट फिनेंशियल मॉडल्स. And initially it started with basic financial modeling to give you a picture of. तो basic financial modeling में क्या होता था कि हमारे पास 4 से 5 साल का डेटा होता था, and that 4 से 5 साल का डेटा were the financial statements of those companies. And these financial statements were generally जो कंपनी के investor relations जो टैब वो होता है, एक टैब होता है, उसमें मिल जाता है.
So initially it started with creating financial models with 4 to 5 years of financial data, financial statements data. And uske baad we used to calculate certain, so credit में basically credit में हमारा valuation नहीं होता है. Credit में it's all about the ratios. From those ratios आप क्या बोल सकते हो कंपनी के बारे में. एंड जो रेशियोज होते थे दैट वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियोज एंड क्रेडिट रेशियोज. ऑपरेटिंग रेशियोज जो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड होते थे, जैसे ग्रॉस मार्जिन हो गए, एबिडा मार्जिन हो गए, प्रॉफिट मार्जिन हो गए, देन रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अपने रिटर्न रेशियोज होते थे दैट वर प्रॉफिट रेशियोज. And then profit ratios or the operational matrix also included our activity ratios. And I'm pretty much sure sabne ratios padhe honge since you are into this course. So activity ratios mein hamara working capital kaisa hota tha, fir our receivables, payables, turnover, inventory turnover ratios. So this was the operational part. Speaking of the credit part or the credit matrix, तो credit matrix basically हमारे कंपनी के डेट और इक्विटी से रिलेटेड होता था कि कंपनी को पैसा कहाँ से आ रहा है और वो पैसा कैसे मतलब इज मेकिंग द एंटायर ऑपरेशंस वर्क, इज द रीजन कि मतलब हाउ इज इट वर्किंग. तो हमारे क्रेडिट रेशियोज में बेसिकली वी यूज टू डिवाइड इट इनटू लेवरेज एंड कवरेज. लेवरेज रेशियोज में हमारा डेट टू एबिडा हो गया, डेट टू इक्विटी हो गया, डेट टू कैपिटल हो गया. एंड सिंस क्रेडिट इज ऑल अबाउट डेट एंड नॉट इक्विटी, तो हमारा मेजर जो फोकस होता था वो सिर्फ डेट पार्ट में होता था. एंड डेट पार्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज या ओनली इम्पॉर्टेंट चीज इज इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट पे कर पा रही है कंपनी टाइम पे या नहीं कर पा रही है. सो इंटरेस्ट के अराउंड हमारे बहुत सारे रेशोज हुआ करते थे, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट कवरेज रेशो, फ्री कैश फ्लो टू नेट डेट. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम कवर करते थे कवरेज रेशो में. एंड मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बोली ये हम प्रेजेंट करते थे सबसे पहले तो फिनेंशियल मॉडल में, और फिर वो फिनेंशियल मॉडल को हम कन्वर्ट करते थे रिपोर्ट्स में. अब वो जो रिपोर्ट्स होती थी वो डिपेंड करती थी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है. तो अगर मैं अगर रिपोर्ट्स की ही, इफ आई एम स्पीकिंग ऑफ रिपोर्ट्स, सो इनिशियली इट started with reading a few reports which were done by my peers and my colleagues and everything. But slowly even I started building those reports. And वो जो reports होते थे, so initially for me it started with one pager reports wherein I just used to give details about one or two liners about what the company's background is, what are its key positives, key negatives. ये हमारा एक सेक्शन होता था, की पॉजिटिव्स नेगेटिव्स एक सेक्शन होता था, और जो थर्ड सेक्शन होता था दैट वाज बेसिकली जो रेगुलरली हमारी जो कंपनी कम आउट विथ क्वार्टरली अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स, तो हम वो क्वार्टरली अर्निंग्स या एनुअल अर्निंग्स के बारे में डिटेल्स देते थे, सो दैट कि अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ कंपनी का जो बॉन्ड है, तो वो चीज़ मतलब वो पर्टिकुलर 4-5 पॉइंट्स पढ़ के आई गेट एन आइडिया कि is it investable or not. And we do not say ki nahi, you definitely have to invest or you definitely do not have to invest. We just give them the idea that this is our understanding on how the company's performance is, be it on operational front or be it on the the debt or the credit front. So we used to create one pager reports and that we used to upload on the company, on the our क्लाइंट जो हमारा असेट मैनेजमेंट कंपनी होता था उसके वेबसाइट में. तो दिस वाज माय इनिशियल फेज ऑफ द करियर वेर इन आई स्टार्टेड, बट slowly that one pager report became 10 pager reports, 5 pager, then 10 pager, then it became creating presentations, then it also increased to attending the investor calls. तो होता क्या था कि एंड जो हमारा ये काम था, सो इसमें इट वाज लाइक इट वाज नॉट वन टाइम वर्क,
इट वॉज कंटिन्यूस वर्क वेर अगर मेरे पोर्टफोलियो में 75 to 80 कंपनीज है, आई यूज टू रेगुलरली ट्रैक देम कि मतलब क्या हो रहा है उस कंपनी में, क्या न्यूज़ है, कब उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड एवरीथिंग दैट विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग माई रिपोर्ट अ सक्सेस, and that will help the client to constantly be updated and make better decisions कि आज इफ आज उन्होंने पढ़ा है कि इस कंपनी का बॉन्ड इज डूइंग गुड एंड ये हमारा ओवरव्यू है फॉर द नेक्स्ट 3 years, so I might invest in it. And if I see कि कोई न्यूज़ ऊपर नीचे हुई है कि some company has come out with a news that उनका ये परफॉर्मेंस थोड़ा सा ये क्वार्टर पे ऐसे होने वाला है, थोड़ा सा कम होने वाला है, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, so we used to give that details as well. So we used to regularly track the news items कि that will affect my company's earnings, that will affect my decision making. So track those news items. Then I used to attend investor calls, जो हमारा regular investor calls होते थे, जो quarterly performance होती थी कंपनी का. So companies क्या करती हैं कि हर क्वार्टर में एक इन्वेस्टर कॉल रखती है, वेर इन दे speak about how the company's performance has been, what they think will be the overview, future कैसा होने वाला है. So I used to attend those investor calls itself. And when it was the earning season. Now earning season देखा जाए तो होता क्या था कि every company has 4 quarters. तो जो एक क्वार्टर खत्म करने के बाद when they used to come out with their earnings, तो होता क्या था कि it was very crucial time for us. होता क्या था, so we used to attend the investor calls or go through the company reports, and we had to send or create the reports immediately and upload it in the the client's website, or provide the details to the client. क्योंकि होता क्या था कि if there was a day or two delay also, it used to hamper the portfolio of the client. And clients used to get very fussy कि यार आपने तो लेट डिटेल्स दिए, या हमने और जल्दी एक्सपेक्ट करा था. So this was what the earning season, so it was very crucial. In a day we used to attend 2 to investor call, we used to create 2 to 3 reports. And this was not every time, specifically जो earning season होता है, that used to be busy for us. हर समय 365 days it wasn't the case कि हर दिन आई हैड टू गो टू ऑफिस एंड आई हैड न्यू एंगेजमेंट्स कि नहीं आज मुझे इस कंपनी की रिपोर्ट बनाना है, आज उस कंपनी की रिपोर्ट बनाना है. ऐसा नहीं होता था. इट वाज लाइक मेरी जो पोर्टफोलियो है उसकी रिपोर्ट्स मुझे अपडेट करना है, एंड वो पर्टिकुलरली उस अर्निंग सीजन में भी अ पीरियड ऑफ 15-20 days वेर इन ऑल द कंपनीज यूज टू कम आउट विद their reports. And by reports I mean the interim reports, wherein company used to disclose their financial statements. So that was my brief portfolio, and then brief work which I used to do. तो अब अगर मैं बात करूँ कि what I was at the start of my equity career and what I was at the end of my equity career. Initially it started with 1 or 2 pages report, but later it started when we started making PPTs, we started making 15, 20 pager reports. And we used to, so जो 1 pager reports होती थी उसमें हम सिर्फ 1 liner में we used to say कि the company was growing with XYZ percentage and the reason for it was ABC reason. But when it came to creating 10 pager reports, so we used to dig deep into each and every point कि अगर कंपनी ने 10% ग्रो करा है, अगर कंपनी ने मतलब अपने एबिटा मार्जिन्स 10% ग्रो करें तो क्यों करे हैं, रेवेन्यू कितना बड़ा है, एक्सपेंस कितना कम हुआ है, हमारा वन टाइम कोई चार्ज तो नहीं है. सो वी यूज टू हाईलाइट ऑल दोज थिंग्स कंपनी का. एंड सो दिस वाज द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ इट. if I speak about the the financing part of it, it was majorly कि कंपनी का जो डेट स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एंड company has it decided to get more loans or issue more bonds to the public
तो study the entire capital structure of the company and then give a detailed analysis of the company. And the detailed analysis, if I speak of, was not just the wordy or just the writing part of it. It was through the graphs, dashboards that we used to create, the we used to show the trends, everything. So that is what we used to do in our detailed report basically. So this was my corporate experience, and if you want I can get into more detail of how the financial models used to look like for us, and how we used to look at each and every aspect of a financial model, so that it becomes easier for our client to come to a conclusion to make a better investment decision. So, no, this is really helpful, Nikita. I think I'm sure सब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है आपकी बात सुनकर, इसलिए बिकॉज इट्स लाइक आपको ही पता है कि कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आता है कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होगी, एंड व्हेन यू आर इन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस जहाँ पे आपको गेटिंग एन एक्सपोजर फ्रॉम टॉप प्रोफेसर्स, getting an exposure from top industry people, and then mentors like you coming and explaining what's happening, इससे बढ़िया 360 डिग्री लर्निंग नहीं हो सकती. Having said that, I will just put up one question to you. जैसे आपने मॉडलिंग को लेके कहा, so when and you mentioned that कि पहले मॉडलिंग में बेसिक 4 पैरामीटर्स होते हैं जब आपने शुरू में मॉडलिंग करना शुरू किया, राइट? So if you can guide our students more from a perspective that what are the situation is all of them will enter the company as a fresher. Yes, they will be trained fresher. They will not be a regular fresher. They will be trained fresher. Correct. So when a trained fresher को आपको एनालिसिस करने के लिए दिया जाए इन अ केपीओ में, तो मॉडलिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? इफ यू कैन टेल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑल द मोर कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा या कुछ चीजों का और ध्यान रख सकते थे जो बाद में पता चला. So the pitfalls, you understand कहाँ पे pitfalls हैं जो अगर पहले से Correct. पता हो तो आप कुछ गलतियां नहीं करोगे. तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा निकिता? तो बेसिकली होता क्या है कि व्हेन यू आर इनटू फाइनेंशियल मॉडलिंग, होता क्या है कि यू कैनॉट मिस ऑन टू डिटेल्स. So for you, one of the major skill set of modeling is attention to details, be it in a KPO or a big four. बेसिकली अटेंशन टू डिटेल्स, ऐसा नहीं होता है कि हमने मतलब मॉडल देख देख मॉडल बना लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया पूरा एंड हमारा काम खत्म. हमें व्हेन आई स्पीक ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, मेजरली क्या होता है कि अब हम अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, या इनकम स्टेटमेंट हम भले ही कंपनी के इंटरिम रिपोर्ट से अपने एक्सेल में ही डाल रहे हैं डेटा इंटरिम रिपोर्ट का, और हम प्रॉफिट एंड लॉस अपना इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं. सो इट इज़ नॉट कि हमें ब्लाइंडली अपनी पूरी इनकम स्टेटमेंट की इंटरिम रिपोर्ट से डिटेल्स लेनी है एंड ब्लाइंडली डाल देनी है फाइनेंशियल मॉडल में या हमारी एक्सेल में. हमें अगर हम देख रहे हैं, हम अगर फाइनेंशियल मॉडल्स का डेटा ऐड कर रहे हैं, तो मेजरली हमें ये जानना है कि रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है. अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा पिछले साल रेवेन्यू $200 मिलियन था, ये साल मेरा रेवेन्यू अचानक से $600 मिलियन हो गया, तो क्यों हुआ ये? आई शुडेंट बी ब्लाइंडली कॉपी पेस्टिंग द डेटा कि अच्छा ठीक है 2015 में इनकम इज 200, 2016 में 300, 2017 में अचानक से इट बिकेम 800. मुझे वो ब्लाइंडली नहीं देखना है, मुझे वो देखना है कि वाई इज इट हैपनिंग. One of the major thing is this कि you need to have an answer to each and everything and see कि क्या है. And attention, when I speak of attention details, attention to detail, उसके साथ another skill set जो आता है वो है financial data analysis का. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है. अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मे बी कंपनी ने नए इन्वेस्टमेंट्स करे हैं अपने केपेक्स में, मे बी कंपनी ने एक नया प्लांट डाला है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे रेवेन्यू को. तो वी नीड टू, लाइक यू मेंशन्ड कि वी नीड टू नो कि तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे क्या वर्क करते हैं, हाउ दे आर लिंक्ड.
तो हमें जब हम फिनेंशियल मॉडल्स क्रिएट करते हैं तो हमें लाइक एवरीथिंग हमारा अकाउंटिंग का डबल इम्पैक्ट होता है, तो वी नीड टू चेक एट दैट डबल इम्पैक्ट कि व्हाट इज इट हैपनिंग, मतलब पीछे की बैक स्टोरी क्या है। एंड एट द सेम टाइम हमारा जो डेटा एनालिसिस का, हमारा फिनेंशियल नॉलेज का हम जब टेस्ट करते हैं, एट द सेम टाइम हमारा रिसर्च स्किल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। बिकॉज तुम्हारी जो रिपोर्ट होती है, यू हैव द डिटेल्स, यू हैव ऑल द डिटेल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट you need to know how to decode that details, you need to dig deep। if you're not getting any detail, any detail in the report, you need to go back to the company's website, you need to go back to company's website and check for any news, check for any statement that the company has made ki we are increasing our operations, ye wo। So this is what is important, ki what are we looking at and why are we looking at this is one of the major thing which I feel is very important when it comes to financial modeling and understanding how a financial model works। You So I must say, yeah, I must say one thing, which is what, so the concept of why analysis you have highlighted pretty well. So there is a concept of why analysis. You need to have an ability to ask why to yeah every statement, right, or every event that has happened. आपने जैसे रेवेन्यू बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, राइट? yes अगर एबिटा कम हो गया तो एबिटा क्यों कम हो गया, एबिटा बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वाई एनालिसिस बोलते हैं, एंड दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट पॉइंट, निकिता, थैंक यू फॉर रीइंफोर्सिंग एंड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे, अगर आप लोगों को याद होगा, अनीश बुचे सर आए थे लास्ट वीक मेंटर सेशन में, ही इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन KPO कैपिटल। एग्जैक्टली ही सेड द सेम थिंग, जी आपको रिपोर्ट पढ़ के पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, और नंबर के पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे निकिता मैम ने कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं आपके, P&L, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, वो आपको बताते हैं बैक स्टोरी। जब आप मॉडलिंग करोगे वो होगा आपका फॉरवर्ड लुकिंग, जिससे आपको समझ में correct आएगा कि भैया आगे क्या होगा। तो फॉरवर्ड लुकिंग थॉट एज वेल एज बैक स्टोरी दोनों पता होना चाहिए। निकिता, मेरा एक सवाल है इसमें, आपने एक्सेल की बात बोली, ऑब्वियसली एक्सेल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी फाइनेंशियल पर्सन एंड यू नीड टू बी गुड इन दैट। तो मैं अगर correct आपसे एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल करूं, वो ये कि एक्सेल में कौन से फंक्शन एक अच्छे एनालिस्ट को हैंड्स ऑन पता होने चाहिए, आप किन फंक्शंस का नाम लोगे, फॉर्मूलाज या फंक्शन, ऐसे 4 से 5? so सबसे पहले तो let me be very honest with you, when initially I started with working on Excel basic, मैं if I had to do sum का फंक्शन करना होता था तो मैं क्या करती थी कि a प्लस बी प्लस सी कर देती थी। बट हर बार ऐसा नहीं हो पाता है, हर बार there are thousands of line items which you need to look at, तो that is when you use sum function। then काफ़ी टाइम पे, एंड वन ऑफ द की मेजर थिंग ऑफ आर financial modeling इज, जब हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तब तो बेसिक फंक्शन, बेसिक एक्सेल फंक्शंस इज फाइन, बट व्हेन वी आर डूइंग द फोरकास्ट एंड एवरीथिंग, जब हमें फॉरवर्ड लुकिंग करना होता है तो हमें हमारा मॉडल जो होता है वो डायनामिक बनाना होता है। तो वो डायनामिक बनाने के लिए देर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्सेल फंक्शंस। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इफ, जो इफ हमारा जो इफ फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन में क्या होता है कि अब क्या होता है, कंपनी के काफ़ी बार ना ये कंडीशन होती है कि जो हमारा जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव वो राइटली पॉइंट आउट होना चाहिए। तो इफ फंक्शन, इफ एरर फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं जो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आर मॉडल डायनामिक। एंड स्पीकिंग ऑफ मेकिंग द मॉडल डायनामिक, एक हमारा इंडेक्स मैच फंक्शन भी होता है, वेर इन यू in that particular function, so index and match function is a better function than so ये हमारे v lookup h lookup के ऊपर वाले functions है। so basically वो होता क्या है कि we have a set of data and we want that data in another sheet, so instead of linking that particular line item, we link the entire portion, and then with the match function in our current sheet
we point out that particular line item. So if I speak about few functions, Excel functions, it would be sum function, it would be if error, if NA, then index match function, then yeah, so majorly, the conditional functions of Excel play a very important role to, make you more fluent in the Excel. Perfect. No, this is very helpful. Let me quickly ask all our participants, मजा आ रहा है? Can I get a quick yes, no, maybe on the chat box? You can be no also, अब नहीं आ रहा है तो. But you need to be as clear as that. Definitely. Or Are if you people are any enjoying? Yes, particular sir. topic you want me to touch. Unmute नहीं करना है, yeah. Unmute नहीं करना है, guys. Let's follow the protocol. It's all about putting it in the chat box. हाँ जी. All right. Nikita, quickly, if you can share your experience in KPMG, that also would be good before we open up the session for question answers. I'll be very honest, KPMG में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. It's just been 9 months, and it was a very cracking KPMG was something I'm very proud of, because it's not, I won't say it's easy, but it requires lots of hard work and detailed knowledge of what your experience has been and whatever you are looking forward to. So for KPMG मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े थे. I'll be very honest, and that applies to every company. You cannot have a chilled out attitude कि हाँ ठीक है देख लेंगे जो होगा. You need to be 100% sure on what you are doing, what you are applying, what you want. So this is one very important thing, and that's what helped me in cracking KPMG ka interview. Then secondly, so yeah, the work culture with KPO was a little, I won't say chilled out, but it wasn't that stringent, which I say is a little stringent in KPMG. And speaking of various compliance, procedures, KPMG has a lot of compliance procedure, because obviously KPMG is a big name. So they need to make sure that, their reputation is not harmed at all. So this was the thing. And then, yeah, thirdly, which I felt was, after joining KPMG is, uh, in equity, it was more towards financial modeling and reporting. I had to, understand the investor's point of view mostly. But in KPMG, I need to understand my company's point of view, because in KPMG, what my profile is of a consultant. सोमवार को आओ क्या उधर शाम को Uh, so yeah, Go ahead, go ahead. it's of a consultant, wherein our clients, they say that this is some one of the problems that they have identified, and they want to have a solution to it. And they let us know that this is one of the problems that they have identified. They feel that there are more problems which need to be solved, be it funding problem, or be it on their operational front, or making their operation more automated, or something like that, making their inventory flows more automated, or whatever it is. And by automated, I don't mean it by in terms of technical or those coding languages, or the technical part, but from the financial part of it. So this is what one of the major skill set that I had to develop in KPMG, was trying to have problem solving skills and trying to understand the company's point of view. And um and in ca- so uh, in my equity experience, it was more towards trying to understand the debt part of the company, because credit is all about fixed income bonds and other financial securities, wherein the loan part of a financial statement. But in KPMG, I need to look at each and every line item, be it debt, be it equity, be it operational. I cannot ignore any one of the item, because one item may lead to lot of difficulties in our entire financial model.
And in KPMG, my role is not limited to, just one kind of work. Either it can be debt restructuring, it can be tax model, it can be equity model or DCF valuation, anything and everything. So this has Sure. been, difficult, or, the learning phase of my KPMG. I'm sure it's quite challenging and enterprising, and that's what you have prepared yourself in 4 years in equity partner. So, and that's why it's very satisfying. And as rightly mentioned, you are very proud of cracking that role for you. So great. Kudos to you, Nikita, on that. Thank you so much, Nikita, for this absolutely inspiring and ground realities. And this is not a GAN, as you rightly said in the initial part of the session. It's I'm sure अगर क्योंकि मैं भी एज ए स्टूडेंट सुन रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट मैं जब सुन रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, मेरे को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक दिस. And it's an opportunity for all of us to hear people from the industry and get inspired, because we are all here because we care for our career, as simple as that, right? So thanks, Nikita, for opening up and sharing your experience, and it has been absolutely amazing. So let's quickly get back to the question answers. Um, I will be moderating that. So there is one question from Akash, initial part of the conversation. He said he asked financial analyst का काम हर कंपनी में similar होता है क्या, अलग होता है? So I will just quickly answer this, and if you want to add something, you can add. फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम हर हर इंडस्ट्री में अलग होता है आकाश. केपीओ में अलग होता है, इन ई कॉमर्स कंपनी लाइक अमेजोन में अलग होता है, बैंक में अलग होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में अलग होता है, ब्रोकरेज फर्म में अलग होता है. बिकॉज जब हम फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंडर, अगर आपको याद हो, हमारे पिछले से पिछले मेंटर सेशन में कहा गया था, इसलिए रिवाइज करते रहना बहुत जरूरी है, वो ये कि फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर 5 जॉब टाइटल्स आते हैं इनिशियली. वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट. तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कौन से सेक्टर में जा रहे हो, आपके अलग अलग रोल्स होते हैं. Am I appropriate in saying this, Vikram? Definitely. And in trying to working on financial analysis, majorly we also need to look at कि what is it that client is wanting. अब होता क्या है कि if I speak about credit only, credit में भी there can be multiple options in financial analysis. Our main thing is we have to know what is it that our client wants, or what is it that the investor will have a better idea of, to the investor will need to make a better decision. So you need to know the outcome kya hai, and on basis of that the financial analysis needs to be. Absolutely well said. कि आउटपुट क्या है, क्रेडिट वाले को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाले को क्या चाहिए, इक्विटी वाले को क्या चाहिए, उसके बेसिस पे आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को लेवरेज करिए एंड उस तरह का आउटपुट दीजिए एंड इवेंचुअली प्रेजेंट करिए. निकिता, वन क्वेश्चन इज देयर. आई नो आपने जब केपीएमजी में इंटरव्यू दिया होगा, इट इज फॉर अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, बिकॉज आप 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जा रहे थे. So and that will be different from that will be different for a fresher interview. I understand that, but overall, and because 80% of our participants are freshers, but आप overall KPMG के interview के process को जरा explain करिए ना, overall, because it may or may not apply to a fresher, but what is the mindset of a KPMG interview process required? So again, from freshers view, what I so there are a few colleagues of mine who are out from colleges, and then they have joined KPMG. So they so her so if it is a campus placement, then they have multiple rounds of what we say, exams, not exactly exams but tests. So be it the logical, those part of the test, the technical part of the test, they have certain tests, and they have 1 or 2 rounds of interviews. That is a if you go through campus. But as far as my knowledge goes, for a fresher who is directly applying, I believe there are 3 to 4 rounds of interviews, wherein people at different levels take your interview, and it's for what profile. Because so I don't work for KPMG India, but I work for KPMG Global Services.
KPMG India is majorly into auditing, taxation, but KPMG Global Services is majorly, providing services to the onshore clients, and it's more towards the detailed orientation of everything. So depending on which company, which profile you are applying, they have a different set of interviews for their for filling that particular job role. Majorly 2 to 3 rounds of interviews is what I have. Makes sense. Makes sense. Makes sense. Perfect. Any other quick questions? We can pick up one or two questions more before we finish the session by the vote of thanks from Sonia ma'am. Any questions, guys? Any other questions? I'm sure ma'am has covered most of the points that was part of the topic without we asking questions. But any other questions, please put that in the chat box. Nikita, while people are thinking of the question, what has been your interview experience in equity? How many rounds and So I won't say it's a funny story, but there was a lot of competition when I sat into equity. So I'll be very honest. I was, the very first one to get placed when the placement season started. And Christ University generally, has 700 to 800 odd students, of which close to 200, close to 180 200 students are finance, are from finance background, are basically doing their MBA in finance. So for equity I had close to 3 rounds, 3 to 4 rounds, wherein first round was my general aptitude, second round was my technical round, third round was in the college itself, fourth round was at the at the equity office. So yeah, out of what, 200 odd students, and during our interviews with equity we had BBA students as well applying for that particular company, though different job roles, but they were also applying. So we had close to 300 odd students applying, and the aptitude test, the technical test for everyone was kind of same, but the interview was different for different profile. So out of those 250 odd students, I believe there were just 5 students who got, who received an offer letter. So again, that was a very proud moment, and because it was my first company I sat for placement, I got into it. I was very happy. So that had been my equity awesome, interview. awesome, awesome. आकाश, आपका सवाल थोड़ा जेनेरिक है ये. आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन. जॉब इंटरव्यू में कितना कंपटीशन होता है आकाश? हर जॉब इंटरव्यू में कंपटीशन होता है. आपको क्या लगता है कंपटीशन नहीं है? बिल्कुल कंपटीशन होता है. हर एक एक सीट के लिए आपके कभी कभी 100 लोग होते हैं एक एक सीट के लिए. सो आई थिंक वेरी जेनेरिक क्वेश्चन आकाश. लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर क्वेश्चन. पवन, in a financial analysis and with supporting certificate of academic helps to achieve good exposure. So, Nikita, you there? First of all, am I audible? Can I get a quick yes on the chat box? Am I audible? नहीं, just say yes on the chat box. Okay. निकिता मैम का शायद वीडियो. पवन, इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ. फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए if you are part of the skill edge program, I don't think you need any other certification, because financial analysis and financial reporting is what you are doing at a very grassroots level, right? So you don't need any other certification per se. But yeah, people can have different opinions, right? So which specification should be focused in terms of growth, like credit? Sonali, I don't understand the question of you. What do you mean by which specification? You should obviously focus on financial reporting, financial analysis, modeling, business valuations. So all the topics that are part of the program, you should definitely focus on. Those are the things that have been repeatedly. हर कोई आके यही बात बोल रहा है repeatedly. मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप इन चीजों को सुन रहे हो, बार बार अपने आप को सवाल करो कि मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या मैं उतना ही पढ़ाई कर रहा हूँ जितना पढ़ाया जा रहा है,
मैं अपने तरफ से कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अडानी का जो हुआ, मैंने कितना अपने हिसाब से रिसर्च किया, मैंने कितना स्टोरी बनाने की कोशिश की, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी. फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल से डाउनलोड किया क्या किसी कंपनी का रिपोर्ट और उसको पढ़ने की कोशिश की क्या, आईसीआईसीआई का बैंक का हो गया या किसी सीमेंट कंपनी का हो गया या किसी आईटी कंपनी का हो गया. ये सोचो, अदरवाइज ये सेशन चलते रहेंगे, मजा आता रहेगा उस मोमेंट के लिए, पर उसको अगर अपने ऊपर अप्लाई करना है तो ये मेहनत करनी पड़ेगी. Am I making sense what I'm saying? All of you, can I get a quick yes on the chat box? Nikita, hi, आपका वीडियो शायद बंद हो गया था. You there? Am I audible, Nikita? Yeah. Can you guys see me now? Actually, there was some issue with laptop, so I logged in through my phone. No problem. So the last question to you, Nikita, किसी ने पूछा था कि फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए कोई सेपरेट सर्टिफिकेशन की जरूरत है या और अदरवाइज? So it totally depends. मतलब ऐसे कोई particular certification नहीं है, but any day for skill enhancement, LinkedIn पे काफी certifications है. आजकल there have been various educational platforms which help us in getting certificates. This just adds to our resume, which gives us a little extra brownie points. I'll be very honest, मैं अभी LinkedIn के certifications करती हूँ whenever I get time because this just enhances my profile. So there are many certifications that is available online, which are free of cost as well, and which are some of the certifications which charge. But this is adding to your skill, and if you do that, it has a little extra confidence on you. It helps you gain. So at the end of the day, yeah, absolutely, it does give you brownie point. At the end of the day, एक बात याद रखना आप सब लोग, and I'm sure Nikita will agree to that. It's a different stage of your career what you require at different certifications. Correct. When you are entering the company, you need skill development at its best. वहां पे आप you cannot say that I have done a certification, I don't know what it is all about. So when you are moving in the company, when you have worked for 2 years, then you start upskilling yourself by doing these LinkedIn certifications because it helps you to enhance your mindset. Also, it makes you a bit different among all the competition in the company because you know those things and आप खुद से जाके बोल सकते हो अपने टीम लीडर से कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ या whatever it is, right? Or vice versa, right? So I'm just adding few pointers from what Nikita ma'am is saying, but yeah, absolutely important to in order to upskill yourself. So Nikita, thank you so much for your time. Your your energy is also very infectious. It's absolutely Mumbai girl. Amchi Mumbai as you initially started. And thank you so much for being on the platform. Over to Sonia ma'am for a vote of thanks. Thank you to all the participants who are here. And I enjoyed thoroughly. I also learned a few things. But yeah, it has been absolutely amazing afternoon for me on Saturday. Over to you, Sonia ma'am. Yes. And thank you so much, sir. Thank you, Nikita, for sharing your experience with us. Because I think it will help our student to gain more knowledge related to this financial analyst profile and all. And thank you for all the participants for joining this session. And you will get the feedback form after the session in your group. So kindly share your feedback, how you like this session and all. And thank you so much, Rohit sir, for your experience also. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Nikita. Thank you so much once again. Yeah. Thank you. I hope I helped you a little bit. And if there's anything, you can reach out to me on LinkedIn. Sure, we will. And, if anything, I'll be happy to help. Thank you so much, Nikita. We will definitely reach out to you. Great talking to you. You have a good day ahead and happy working for you and happy learning for all our participants. Definitely. Thank you. Good day. Bye. Bye. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #स्किल से करियर तक हम आपके साथ हैं.